Now let's look at this problem. So what is this problem saying? If the body is accelerating at a uniform rate from the initial velocity 10 meter per second to the final velocity 20 meter per second, find the average velocity of the body. So इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है और फाइनल वेलोसिटी दिया गया है, इसका हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी जब दिया होता है तो उसका एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं? Obviously it is very important that the body is at a uniform rate, accelerating at a uniform rate, right? तो कोई बात नहीं, ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन है और हमने पहले भी सीखा है कुछ इस तरह में, या यहाँ पर आप देखो तो average velocity is equal to initial velocity plus final velocity divided by 2. So we will use this formula to find the answer. So we have drawn the picture here. So this is starting velocity of the object, which is u is equal to 10 meter per second, and finally the body reaches to the final point and it was in 20 meter per second. So same thing, you have to write the given u is equal to 10 meter per second, v is equal to 20 meter per second. We know the average velocity formula. VAV we used to represent for average velocity. VAV is equal to u plus v divided by 2, which is 10 plus 20 divided by 2, which is 30 by 2, which is 15 meter per second. Now let's go to the second question. So what is the second question? A stone is thrown in a vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second. So एक पत्थर को ऊपर थ्रो किया गया है एकदम सीधा, वर्टिकली अपवर्ड, एकदम सीधा ऊपर की ओर उसे थ्रो किया गया है। इसका वेलोसिटी, जिसका वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। सो 5 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से उसे वर्टिकली अपवर्ड, उस स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है। If the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second, so in the downward direction, obviously acceleration on the body or acceleration on the stone, so उस पत्थर में एक जो acceleration होता है वो है 10 मीटर पर सेकंड, पर वो नीचे की ओर है। इसका मतलब ग्रेविटी उस पत्थर को नीचे खींच रही है। ओके, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलमोस्ट इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, उसी को ऐसे बताया है इसमें कि 10 मीटर पर सेकेंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि देखो आप पत्थर को थ्रो कर रहे हैं ऊपर, सो ऊपर से ऑपोजिट डायरेक्शन है नीचे। सो नीचे जब उसका एक्सेलरेशन होगा तो ऊपर की ओर तो वो ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। जब एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन में होता है या कुछ भी ऐसा ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन में हो, तो उसे हम निगेटिव एक्सेलरेशन में या फिर निगेटिव वे में लिखेंगे, राइट। सो इफ द एक्सेलरेशन, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए था यहाँ पर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर in the downward direction, what will be the height attained by the stone? So सबसे ऊपर तक का हाइट कितना होगा उस पत्थर का? ओके, जब आप इसे 5 मीटर पर सेकेंड से थ्रो करोगे तो कितना ऊपर तक वो पत्थर जाएगा? एक बार तो उस पत्थर को नीचे आना ही है, ग्रेविटी तो उसे खींच ही रही है ना। जब सबसे ऊपर जाएगा तो उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, उसके बाद वो नीचे आना स्टार्ट कर देगा। तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर? सो और कितना टाइम लगेगा उसको एकदम टॉप हाइट को अटेन करने में? सो उसका फिगर हमने ड्रॉ कर लिया है, कुछ ये इस तरह दिखता है। सो एक पत्थर को ऊपर की ओर थ्रो किया गया है, उसका इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, और जब वो ऊपर पहुंचता है तो एक बार में वहां पर वो रुकता है, उसके बाद नीचे आना स्टार्ट होता है। तो नीचे आने का तो हमारा जरूरत नहीं है, सबसे ऊपर तक कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी तो 0 होगा, और इसका हाइट हमें ढूंढना है और इसको कितना टाइम लगा है वहां तक पहुंचने में वो भी ढूंढना है। और एक्सेलरेशन हमें दिया गया है कि वो नीचे की ओर है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, तो ये एक्सेलरेशन होगा हमारा निगेटिव एक्सेलरेशन। यहाँ पर भी गलती कर दी मैंने, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए था। तो हाउ टू सॉल्व इट, लेट अस लुक एट दिस। तो यहाँ पर भी एक गलती, फिर से स्क्वायर में गलती हो गई। So u is equal to 5 meter per second, v is equal to 0 meter per second, a is equal to -10 meter per second, since it is in the opposite direction of the motion. So we have to find the height and time. So we know v is equal to u plus at.
So put the value, because why you do this, first of all you have to find the time. So you have to find the height, or you can do v square minus u square equal to twice as. You can use this to find the height directly, and then v equal to u plus at for time. So whatever you want you can do. So I have done this. You can use any of the three equations of motion so as to find height or time, height and time. Okay, in this case, for time you use v equal to u plus at. For height you can use v square minus u square equal to twice as. So you can use the third equation and first equation of motion so as to find these two parameters. So I have done quite in a different way. I have found first time, then I have used the second equation of motion to find the height. How? Let us look at this. V equal to u plus at I have used. Put the value of v, u and a. You get the value of t. By simplifying, we get t is equal to 5 by 10, which is equal to 1 by 2, which is 0.5 seconds. So time is 0.5 seconds. So again we have s is equal to ut plus half at square. So we have used the second equation because now you have found t. So if you have found t, you have the other things, so you can directly use it in the second equation of motion so as to find s. But s we have used here like height, so I have kept this as h. So you use here h. You can use anything. S also is, there is no harm in using s. So h is equal to 5 into 1 by 2 plus half into a, put the value, and then this is t as half. I have not used the decimal form because we have to cancel out, and if you keep in this manner then sometimes it is easy to calculate. So for ease of calculation only I have used this fraction form. So 5 into 1 by 2 plus 1 by 2 into minus 10. Remember a is negative, you have to put the negative value only. So half. So half square is 1 by 4. So you can calculate it, simplify it. This is 5 by 2 minus plus minus is minus 5 by 4. So now this becomes, you take the LCM, you simplify, you get the value as 5 by 4. So height is equal to 5 by 4 meter, which is equal to 1.25 meter. So the stone attains the height of 1.25 meter and it takes time 0.5 seconds to reach that height. The height attained by the stone is 1.25 meter and time required is 0.5 seconds. So this is how you have to solve this type of problems. So this type of problems are easy and most likely to come in exams. So you have to practice lot of such problems. Okay. So next question we can go is this: a motorboat starting from rest on a lake. सो एक लेक में एक मोटर बोट है जो रेस्ट से स्टार्ट होती है. तो रेस्ट से जब स्टार्ट होगी तो इसका इनिशियल वेलोसिटी ऑब्वियसली जीरो होगा, क्योंकि वो ऐसे ही था, खाली था, तो वो चल नहीं रहा था, इसका मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा. सो एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन मोशन का ही हम यूज करेंगे, क्योंकि हमारा जो थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन में ही काम करता है. So a motorboat starting from rest on a lake accelerates in a straight line at a constant rate of 3 meter per second square for 8 seconds. So आप ये यूनिट देखकर ही इसे बता सकते हो कि ये एक एक्सेलरेशन है और ये 8 सेकंड यानी टाइम है. तो यूनिट देखकर आप बहुत कुछ एक झटके में ही जान सकते हैं. तो मोटरबोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन होता है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, टाइम 8 सेकंड. सो कितनी दूरी ये बोट ट्रेवल करती है ड्यूरिंग दिस टाइम. सो इस 8 सेकंड में वो कितना दूर चला गया होगा. तो दिखने में कुछ इस तरह लगेगा. ये बोट एक इनिशियल वेलोसिटी जीरो में रेस्ट से स्टार्ट होता है, एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम 8 सेकंड है. तो डिस्टेंस हमें ढूंढना है. कैसे ढूंढेंगे? सेम वे, write given conditions, u is equal to 0 since the body is in rest, so acceleration is 3 meter per second square, time is 8 seconds, distance is equal to, this is what we have to find. So use the second equation of motion because u, a and t is there, so you can put the values there. So s is equal to ut plus half at square. Since u is 0, no matter whatever is time, this part will be 0 only. Then plus 1 by 2 into acceleration is 3 and time is 8 seconds. So look at the units, it's meter per second, second. So obviously you can directly use it here. So this is equal to half into 3 into 8 square means 8 into 8. Cancel out, simplify, you get s is equal to 96 meter.
सो द बोट ट्रेवल्ड 96 मीटर ड्यूरिंग दिस टाइम। सो बोट कितनी दूरी चली गई उस 8 सेकंड में? 96 मीटर। सो उस बोट ने 96 मीटर कवर किया है। सो दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन।